Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter 3, Path of Selfless Karma, verse 3.41. तस्मात् त्वामिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ. It is said about that desire or lust. Tasmat tvam. So Lord Krishna is saying, so you, tasmat tvam. Therefore tvam, you, indriyani adav. Your senses, indriyani means senses, adav, at its initial stage. Niyamya, you should control your senses in initial stage. Bhartarshava, oh, the matchless person of Bharat dynasty. That is Bhartarshava. That is the great mighty person of Bharat dynasty. Bharat वंशियों में श्रेष्ठ हे अर्जुन, तुम प्रारंभ की स्थिति में ही इस इंद्रियाण आदव नियम्य, अपनी इंद्रियों को शुरू में ही नियम्य, अपने नियंत्रण में कर लो. पापमानम प्रजह्येनम, these are sinful. Prajahyenam, so slay it, so destroy it. Gyan Vigyan Nashnam, because this desire is the destroyer of knowledge. Gyan Vigyan, knowledge and realization. So it is said by Lord Krishna in this verse that this desire is sinful and it tends her, it inclines her to material world and it phases out us from the path of self-realization. So if at its initial stage, it is slayed down, it is curbed, it is controlled, then only we can go to our real path. Otherwise, we will be inclined to this world and ultimately our precious life will go in vain. The literal meaning of this is, therefore, O scion of Bharat dynasty, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरतर्षभ, after first controlling the organs, renounce this one which is sinful. This one is set for demoness desire. So you should renounce it. You should leave it. Renounce this in initial stage, which is sinful and destroyer of learning and wisdom, because otherwise this desire will consume our knowledge and the power of discrimination. Like fire consumes all, in the similar manner, desire not only consumes our complete life, but it also कंज्यूम्स आवर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये हमारे अंदर जो विवेकनी बुद्धि है उसके सही और गलत के फैसले करने की क्षमता को भी ये इच्छाएं और कामनाएं खा जाती हैं. इसलिए कामनाओं को प्रारंभ में ही नियंत्रित करना चाहिए. इसको हवा नहीं देनी चाहिए. जो हमारे लिए आवश्यक है, जितना हमारे शरीर पालन के लिए, शरीर यात्रा के लिए आवश्यक है, वह भगवान हमें दे देता है. बहुत ज़्यादा अपने इंद्रियों के कामनाओं की पूर्ति के लिए और इंद्रियों के आनंद के लिए हमें इसकी ओर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर धारण का मुख्य उद्देश्य भी नहीं है. So, now Shri Krishna explains how to overcome lust, the root of all evils, which is so pernicious. That means it longs last. It is not that it can easily be renounced. It is a pernicious thing. So Shri Krishna emphasizes that lust is a pernicious to human consciousness. Even identified the repositories of lust, Shri Krishna asked Arjun at the outset to curb the desire of the senses, permitting them
to arise is the cause of our miseries. It is not that if desires are fulfilled, we will get happiness. It is the cause of miseries. It never ends. When one desire is fulfilled, then other desire at more strength is arised. So in this manner we will be at the miseries, and the person जिसकी कोई कामना नहीं है वही राजा है, और जिसकी कामना है वो, दैट इज ए काइंड ऑफ माइजरीज, वो दुख में जीता है. कामना वाला व्यक्ति क्षणिक कामना की पूर्ति पर तो आनंद आता है, फिर अगली कामना के लिए वो दौड़ पड़ता है, वो जीवन भर दौड़ता रहता है. इट इज डिजायर इज द कॉज ऑफ ऑल माइजरीज. वाइल एलिमिनेटिंग देम इज द वे टू पीस. जिसके कोई कामना नहीं है वही शांति में जीता है. It is the way to peace. Consider the following example that I have also explained in the last class. A person at night is having some desire of sweet. There were two friends in some dormitory. One was having desire of sweet, other was also having, but the other person has thought that it is too late now and let me sleep, and we will not go for sweet. However, other person that ultimately stimulated the desire and put some fire on it, that no, it is the desire of sweet and I have to go and quench my desire. So he gone out, wandered here and there up to 12 o'clock, and ultimately managed to get one of the sweet shop opened, and now quench the desire, came, and lastly at 1 o'clock night he slept. Morning both of them when awaken up, then the person who has quenched the desire at its initial stage said, I slept calmly and composed manner at 10 o'clock, while the other has said up to 1 o'clock I was in restless condition. So this desire makes us restless, and ultimately in morning both of them are having same state. So we should not strengthen our weak points. Desires are our weak points. Let it we should get rid of in its initial stage, that Shri Krishna is consulting Arjuna. Now Shri Krishna tells Arjuna to bring the senses under control, thereby slaying the desire, lust residing in them. To accomplish this, we must use the higher instruments. So how it can be controlled? Because these are originated from our senses, strengthened by our mind, and ultimately this our intellect also get inclined towards it. ये जो कामनाएं हैं हमारी इंद्रियों से उत्पन्न होती हैं, और मन भी इनकी ओर झुक जाता है क्योंकि इनके करीब है, और बाद में ये बुद्धि की भेदन क्षमता को या विवेक क्षमता को भी ये खा जाती हैं, और बुद्धि सही गलत में भेद नहीं कर पाती. तो भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हम इन कामनाओं को शांत करें. ऐसा अगले श्लोक में कहा गया है. वर्स 3.42. इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परसस्तु सः परतस्तु सः. इंद्रियाणि पराणि आहु. Ahu means said. So our senses are said to be superior. From which? From our body. So body is subtle. However, the senses are microscopic. So these are finer. So जो जितनी सूक्ष्म होती है वही उतनी शक्तिशाली होती है. तो इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म हैं इसलिए वे शक्तिशाली हैं. Our senses are mightier than our body. If one of our senses, like eyes, want to see beautiful things, then we will run towards Kashmir. We will run here and there and everywhere we want. So these are mightier one. Our senses,
the smell of some aroma of some sweet or any fragrance, so that we may chase to that place. So it is our senses leads us to its presence, where they are, where the stimulis are there. So indriyani paranyahु indriyebhya paramana. However, mind is more finer, more microscopic. So mind is finer and stronger than our senses. If our mind says no, no, why to go for sweets and this, because some of our near and dear had died, I don't like to go anywhere. So the mind, where the mind rests, then our senses loses the battle, because ultimately mind is superior at higher position than senses. If mind goes along with them, then only these are fulfilled. If mind does not go along with them, then nothing can be done. Our any of the desire cannot be fulfilled. So they want the company of mind. If they are accompanied by mind, then only their desires are fulfilled. So mind is superior. If our mind is restless or it is under grief, so we do not matter about our physical desires. We are under grief and sitting alone at some place. So mind is superior. And man sastu parabuddhe, that our intellect is superior than our mind. Intellect means the discriminatory power. What is wrong and what is right, God has given this such power also, where you should go and where should not, you should not go, what is eternal and what is ephemeral, क्या शाश्वत है और क्या नश्वर है, क्षण भंगुर है, इनके बारे में हमें विभेद करने के लिए विवेकनी बुद्धि दी गई है, और वो विवेकनी बुद्धि हमारे मन से अधिक शक्तिशाली है. सो अवर इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि, अवर इंटेलेक्ट इज सुपीरियर देन माइंड, वो मन से अधिक शक्तिशाली है. लाइक द वेरी great personalities, Einstein, Lata Mangeshkar, whose complete life is a renunciation, that they have done only tap. So those, whatever they decide, they do so. They know what is better for them. Like a doctor knows that to eat the street food is not good for them. So doctor is not favoring for them, because intellect knows. And the intellect, the consciousness level of doctor, PhD holders, the great singers, the great fielders, or the great actor and actress, they know what to eat and what not to eat for being physically fit. They do not go with mind. वे मन के साथ नहीं जाते कि ये अच्छा लग रहा है तो खा लो. वो जानते हैं कि जीवन की तपस्या क्या है और हमें किधर जाना है. वे लक्ष्य को जानते हैं. वे मन के साथ नहीं जाते और एक निष्ठ होकर, जैसा कि लता मंगेशकर ने जीवन में गोलगप्पे नहीं खाए. उन्हें मालूम था कि उनके वोकल कॉर्ड के लिए वे ठीक नहीं हैं. सो आवर डिस्क्रिमिनेटरी पावर कंट्रोल्स आवर माइंड. मन सस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सा. एंड द soul is superior. Soul is finer and microscopic. Hence it is superior than our intellect. So the level is how, that is, first comes body, then more superior is senses, then more superior is mind, then the superior one is intellect, and then soul. So this is the order of superiority. And more superior and more finer and more microscopic is thing, it can well control everything. जैसे रथ पर बैठा हुआ रथी पूरे रथ को कंट्रोल कर लेता है, वो लगाम को कंट्रोल कर सकता है, घोड़े को कंट्रोल कर सकता है, उसी तरीके से आत्मा इस शरीर में ये रथ है तो वो रथी है, वो उसको चलाने वाली है. सो हमें उसे जगाना चाहिए. सो बाई आवर इंटेलेक्ट वी कैन गो टू राइटियस पाथ, सो दैट ऑल द मायर्ड मड अराउंड आवर सोल is scattered, it is decayed, and ultimately
the enlightenment of our soul comes out so that it controls well to our body. Atmanyevatmana tushta. The person becomes in such a manner. So, the literal meaning of this is, they say that the organs are superior to our body, the mind is superior to organs, but the intellect is superior to mind. However, the one who is superior to intellect is he, that he is said to the spark of God, that is the soul. As inferior entity can be controlled by its superior entity, Sri Krishna explained the gradation of superiority amongst the instruments of God that has provided to us. He describes that the body is made of gross matter. Superior to it are the five knowledge bearing senses. So it is also upgradation of energy level. Most of our energy lies at these five senses. So the energy content is more at the senses. So more is the energy, means more is the power. So here body is made of gross matter and superior is the five senses, that is the gaps of perception of taste, touch, sight, hearing, and smelling. Beyond the senses is mind. So mind is more powerful and it controls the senses, and from to mind is the intellect with its ability to discriminate. So intellect says no, I will not go with mind. Mind says okay, go, let us have some sweets, because it is our बॉडी, आवर इंटेलेक्ट इज डिज़ायरिंग, हमारी इंद्रियां कह रही हैं, हमारे जिह्वा कह रही है, जीभ कह रही है कि कुछ मीठा खा लो, तो मन कहेगा हाँ हाँ चलो इसकी इच्छा पूरी कर लो. मन भी स्थूल है, मन भी इसी सांसारिक जो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टता, जो 8 प्रकृतियां हैं उन्हीं से मन भी बना हुआ है. सो मन बुद्धि अहंकार इनसे ही बने हैं, तो वो भी सांसारिक चीज़ों की ओर भागते हैं. और कई बार जो बुद्धि है, बुद्धि भी इनसे है तो जा भी सकती है, और बुद्धि विवेकनी है. अगर उसमें धीरे धीरे और हमारे प्रज्ञान चक्षु खुल गए हैं, धीरे धीरे विवेकनी बुद्धि को हमने जागृत कर लिया है, तो उसके कई प्रकोष्ठ हैं. सो ऊंचे ऊंचे कोष खुल जाने पर, ऊर्जा स्तर खुल जाने पर फिर बुद्धि ईश्वर की ओर चली जाती है. उसे मालूम है कि मन का साथ नहीं देना है, ये हमें नश्वर संसार की ओर ले जाएगा. सो नाउ द इंटेलेक्ट हैज़ ए डिस्क्रिमिनेटरी पावर. सो वी शुड नो द सीक्वेंस सो दैट वी कैन अडॉप्ट द राइटियस पाथ. Next verse is 3.43. एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम. एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा. सो बुद्धे परम बुद्ध्वा, that means knowing that our intellect is superior, thus knowing that our intellect is superior. Evam buddhe param buddhva. Buddhva means knowing that buddhi is param, superior. So evam buddhe param buddhva santabhyatma atmanam atmana. Santabhya atmanam atmana. We should subdue, we should ultimately eliminate atmanam atmanah. So we should subdue the lower self from our higher self. Atmanam, our whatever things which are moving us to material world, these are said to be atmanam by atmana, by soul, using the power of soul and its closer friend, that is intellect is its closer friend. So the atmanam atmana, by our soul and by intellect, we should subdue, we should slay, we should renunciate to what that is sinful.
Jahi Shatru Mahabaho Kam Roop Durasadam. In the next verse, in the next line, it has been said, Jahi Shatru, slay or kill the Shatru, O Mahabaho, O mighty armed Arjun. This enemy, this desire is the enemy. Just kill them, just eliminate them, detect them in its initial stage. इस कामना को प्रारंभ में ही पहचान लो. अग्नि को अगर तुम हवा दोगे, उसको ईंधन दोगे तो वो बुझती नहीं है, वो बढ़ती ही चली जाती है. इसलिए अग्नि को शुरुआती दौर में, अग्नि को हमें शुरू में ही समाप्त कर देना चाहिए, उसे ईंधन नहीं देना चाहिए. जहि शत्रु, किल दिस एनिमी, ओ माइटी आर्म, काम रूपम दुरासदम. दिस इज दुरासदम, दिस इज formidable, and it comes in the form of desire, and kill it. Do not support it, do not add fuel to it. The literal meaning of this verse 3.43 is understanding. Now, understanding the self, thus desire can be conquered through knowledge. Understanding that desire can be conquered through knowledge as superior to intellect and completely establishing is spiritual absorption, O mighty armed. So completely establish that desire can be conquered through knowledge. कि कामनाओं को बुद्धि से, ज्ञान से जीता जा सकता है, विवेकनी बुद्धि से जीता जा सकता है. ये बात जानकर, ओ माइटी आर्म्ड, वैनिश द आर्मी इन द फॉर्म ऑफ डिजायर. तुम इस शत्रु को, कामना रूपी शत्रु को समाप्त कर दो. विच इज सब डिफिकल्ट टू सबड्यू, जो कि कठिनता पूर्वक पराजित होने वाली है. यदि इसको अधिक बढ़ावा दिया जाए तो इसको प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही जानकर समाप्त कर लो, बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए. In conclusion, Shri Krishna emphasizes that we should slay this enemy through knowledge of self. The soul is the part of God which is divine in nature. We must exert and train the intellect to think in this manner and use it to control the mind and senses. That intellect should have a control over mind and senses. यदि बुद्धि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करती है, यही बुद्धि का साफल्य है, यही उसकी सफलता है. तभी बुद्धि आत्मा की ओर उन्मुख हो पाएगी और हम सही रास्ते पर चल पाएंगे. और यदि बुद्धि साथ देने लगती है तो वो अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पावर, अपने सही और गलत पहचानने की क्षमता को भी खो देती है. वह एक अपने से छोटे की गुलामी करने लगती है, जैसे मालिक नौकर की गुलामी करने लगे. लाइक मास्टर एंड स्लेव्स इज हैविंग स्लेवरी of following a slave. In the similar manner, if our intellect is following the mind and senses, then its superiority got lost. So the proper function of intellect is to know what is right, what is wrong, what leads us to material world and what leads us to spiritual world. So it should not follow the mind and senses. Only detect that whatever is useful our बॉडी वॉयज, हमारी शरीर यात्रा के लिए कितना उचित है, उतना ही मन और इंद्रियों को इसे बल देना चाहिए. आनंद, शरीर के आनंद के लिए नहीं. फॉर नॉट द हैप्पीनेस ऑफ बॉडी, बिकॉज अवर path, our voyage is something novel which can make us to submit to God. So this is chapter 3, which lasts at 3.43. 43 verses are there. Now the fourth chapter is approaching the ultimate truth. That is कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग. That what does it mean by ज्ञान कर्म संन्यास योग? That by our ज्ञान, by our
knowledge, by our intellect. So by our intellect we can detect whatever we are doing, and we should not go for its fruitive results. We should only submit it at the feet of God. हमें अपने ज्ञान के द्वारा यानी बुद्धि के द्वारा ये जानना होगा कि हम जो कर्म करते हैं वो भगवान की शक्ति से करते हैं, और उन कर्मों को चूंकि भगवान की शक्ति से करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, भगवान के द्वारा कराए जाते हैं, और ये भगवान के बनाए हुए सारे पसारे में ही हम करते हैं, तो इसलिए इन्हें भगवान के ही चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। ये भी हमें भगवान से मिलाने वाला हो सकता है। हर एक अध्याय अपने में पूर्ण है और वो हमें भगवान से मिलाने वाला हो सकता है, यदि हम बुद्धि को इस रूप से प्रयोग करते हैं कि फल पर हमारा अधिकार नहीं है, और इसे जो भी कर्म हैं हमारे भगवान के द्वारा कराए जाते हैं, तो इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। The knowledge given by Lord Krishna to Arjun, whatever knowledge Shrimad Bhagwat Geeta is said, it is not the manipulated knowledge. It is not that the Arjuna was not inclined, phases out from this war, so now Shri Krishna is manipulating the knowledge to Arjuna. Lord Krishna says, no, it is not the knowledge given to you, yourself only. This is eternal. It is from initial of the universe. I have given this knowledge to whom and whom and whom, and how this knowledge is descended to you. It is knowledge of eternity. So Shri Krishna is telling the importance of this knowledge of spirituality to Arjuna. Verse 4.01. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वानमवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत इवं विवस्वते योगम. So this knowledge I have imparted to Vivaswate, that means Vivaswat, that is sun. सूर्य को ये हमने ज्ञान दिया. प्रारंभ में भगवान कहते हैं द आदि गुरु, आई एम द फर्स्ट गुरु of this world, and I have given somebody who is imparting the knowledge is said to be guru. So God says that I have given this knowledge to Vivaswat, that is the sun god. सूर्य देवता को मैंने ये ज्ञान दिया. इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम. प्रोक्त वाहन अमव्ययम. So that is प्रोक्तवान अहम अव्ययम. So I have taught अव्ययम, eternal knowledge, अव्ययम जो खर्च न हो. This अव्ययम knowledge, प्रोक्तवान अहम, I have said, प्रोक्तवान अहम, I have said, अव्ययम, this eternal knowledge to Vivaswat. इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम. योगम, that means the science of yoga. So this knowledge is the science of yoga. What does it mean by yoga? It attaches us, our soul, to super soul. So this is a kind of addition, this is a kind of attaching or submerging. So that is called yogam. Vivaswanam manave praha. So विवस्वत हैज प्रोक्तम, उन्होंने इस नॉलेज को किससे कहा, इस विज्ञान को किससे कहा. सो नाउ विवस्वान हैज सेड इट टू मनु, मनवे. विवस्वानम मनवे प्राहम. विवस्वान ने मनु को कहा. मनु इस ब्रह्मांड में मनुष्यों के रचयिता माने जाते हैं. सो दिस नॉलेज हैज बीन इम्पार्टेड बाय विवस्वान टू Manu. The original progenitor of humankind, Praham, that means
told. So Vivaswan has told this to Manu. Manu Ikshvakam Abravit, and this is the solar dynasties. The first king was the Ikshvaku. Ikshvaku once, that is, again came and descendant was Ram. So solar dynasty सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी में ही इक्ष्वाकु पहले राजा हुए और फिर उसमें भगवान राम भी हुए. सो मनु हैज imparted this knowledge to Ikshvaku king. So in this way this knowledge is eternal, and from starting it is flowing from one to other king. So Lord Krishna is telling the importance of this knowledge. The literal meaning of this slok is, the blessed Lord said, I imparted this imperishable yoga to Vivaswan. Vivaswan taught this to Manu, and Manu transmitted this to Ikshvaku. Merely imparting invaluable knowledge to someone is not enough. That it is a good knowledge and it is to be given to anybody, it is not enough. The recipient of that knowledge must appreciate its value. तो ज्ञान को जानने वाला भी उस योग्य होना चाहिए जिस कैडर का ज्ञान है. Knowing must appreciate its value and have faith in its authenticity. Only then it would be put in the effort required to implement. If the person is knowledgeable, this person is worthy, then only that can impart the knowledge. Otherwise it is putting it to waste win. So Lord Krishna is saying, I have said this knowledge to whom and whom, and these are the epitome of various dynasty. ये अलग अलग राजवंशों के स्तंभ हैं जिनको हमने ये बात कही. Now in this verse Shri Krishna establishes the credibility and importance of spiritual wisdom he is bestowing to Arjun, that I am bestowing it to you. मैं तुमको इसके द्वारा वरदानित कर रहा हूँ. And it is not that average knowledge. It has been given to whom and whom, and by implementing knowledge they became so famous. Shri Krishna informs Arjun that the knowledge being imparted to is not newly created, that motivating you to battle because you were not motivated. So it is not that I have created it here itself to motivate you to battle. It is same eternal science of yoga that originally taught to Vivaswan, then ultimately transferred to Manu, and Manu has transferred it to Ikshvaku, the king of solar dynasty. This is the descending process of knowledge. So this is perfect authority of knowledge which passes through perfect persons. In contrast to this is the ascending process of acquiring knowledge, where one endeavors to enhance the frontiers of understanding through self efforts. So when knowledge is given, now there are the two processes. One is the ascending process and other is descending process. Ascending process does not require guru. Ascending process means आरोह मार्ग, जहाँ हम सोचते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मुझसे ही सब पसा रहा है, मेरे अंदर जो आत्मा है वही सब पसा रहा है. सो हम अपने मूलाधार से सहस्त्रार्थ की ओर ऊर्जा को ले जाते हैं. दिस इज असेंडिंग प्रोसेस ऑन आवर ओन पावर्स, on the basis of own energy. We want to acquire the fulfillness. This is also possible, aham brahmasmi, but there are chances that at many times we may fall. This is against gravity, against nature. So many a times while ascending our energy from lower chakra to the uppermost chakra, chances of imbalancing or non-equilibrium state may be there. So in this case, one is without guru we may follow. First we think that what is happening, so we anticipate some of the logic that this is happening due to this and go for its verification. हम सोचें कि ये क्यों हो रहा है, उसके लिए अपने मन में कुछ कल्पना करें, कुछ सिद्धांत बनाएं और उन पर उनका सत्यापन करें. एंड द अदर प्रोसेस इज डिसेंडिंग प्रोसेस, दैट इज अवरोह मार्ग. इसमें गुरु का सहारा लिया जाता है
और योग्य गुरु जो हमें बताता है उस पर पूरा विश्वास किया जाता है, और फिर जैसे जैसे वो बताता है और हमारी शंकाओं का समाधान करता है तो चीज़ें हमें पता करती चलती जाती हैं। डिसेंडिंग प्रोसेस अवरोह मार्ग एक जीवन में पूरा हो सकता है, जबकि आरोह मार्ग ये कई जीवन में पूरा होने वाली प्रक्रिया है, और इसमें ईश्वर का उतना वरद हस्त भी नहीं रहता, कृपा भी नहीं रहती। जबकि हम अगर अवरोह मार्ग रहते हैं तो हम पूरा भक्ति के सहारे रहते हैं, भगवान की कृपा पर आधारित मार्ग है। सो हियर लॉर्ड कृष्णा is telling that I have descended this knowledge. I am आदि गुरु, मैं पहला गुरु हूँ और मैंने आसानी से ये लोगों को बताया, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट किया। इस तरीके से ये ज्ञान आगे बढ़ता चला गया। भैया आज भजन कौन गाएगा? Is anybody who is reciting today? आप ही गा दीजिए। ओके। श्री राम लगी लगन, गुरुदेव कृपारे, प्रभु वियोग में तड़पे मन जस, प्रभु वियोग में तड़पे मन जस, मीन की हो जलहीन दशारे, लगी लगन गुरुदेव कृपारे, स्वाति जल जिमी चातक चाहे, स्वाति जल जिमी चातक चाहे, दौलत पाय पतंग उजारे, दौलत पाय पतंग उजारे, लगी लगन गुरुदेव कृपारे। ऐसी लगन लगनी चाहिए जैसे मीन की जलहीन दशा हो जाती है, मछली जैसे बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही हम अपने अधिष्ठाता के लिए, अपने भगवान के लिए तड़पें। जैसे चातक स्वाति जल के नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद के ही जल को पीता है, और जैसे अग्नि को पाकर पतंगा अपने को उजाड़ देता है, अपने को जला देता है, वैसे ही हम अपने अधिष्ठाता, अपने प्रभु के ऊपर समर्पित होने के लिए हमेशा आतुर रहें। चंचरी कजिमी पंकज भावे, माखी में मधु प्रेम भरारे, लगी लगन गुरुदेव कृपारे। भंवरा चंचरी कमल के ओर इर्द गिर्द मंडराता रहता है, ऐसे हम भगवान के रूप का, रस का, उनकी कृपा का आनंद लें। माखी में मधु प्रेम भरारे, और मक्खी जिस प्रकार से शहद के लिए आतुर रहती है, वैसे ही हम अपने प्रभु के चारों ओर भिन भिनाते रहें। जल जिमि संगम सागर खोजे, जल जिमि संगम सागर खोजे, पावक की रवि और शिखारे। जल की बूंद कहीं भी छोड़ दी जाए, आधा ग्लास पानी भी गिरा दिया जाए, तो वो अपने आदि स्रोत की ओर मुड़ता, घूमता, वाष्पीकृत होता हुआ वो समुद्र में ही मिल जाता है। वैसे ही हम आत्मा
अपने परमात्मा में मिलने के लिए आतुर रहें। पावक की रवि ओर शिखारे, उसी प्रकार से अगर दिया सलाई जलाई जाए तो उसकी जो लौ है वो सूर्य की ओर होती है। तो हर एक तत्व अपने आदि स्रोत में मिलना चाहता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा भी परमात्मा में मिलने के लिए ऐसे ही आतुर रहे और हमारी लगन ऐसे ही लगी रहे। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, नतमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो माँ। श्री राम। राम श्री कुमार।